speak? Yes. What's up? It is what or not? I can't understand Excel, so I have shared you a picture. No, I did not receive the pic yet. Maybe it will be in some time. Okay. So, Sangamitra, we are going to learn about data types conversions. How to convert from one data type to another data type. Conversions of data types, or we can also call this as typecasting. Correct. Like this, you have to make headings. Okay. So conversions of data types, or we call it as typecasting. Okay. Now, in this we need to understand there are a few functions. There are few functions in Python by which we do type conversions. Of second one is float of, third one is str string, fourth one is, what is the fourth one? Complex of, and then fifth one is bool of. So we are using these things. These are the functions we are using. So we are going to talk each and everything one by one. Let's see. So now, first of all, what is the meaning of this int of? What is this int of will do? So let's take this now. But before this, we have to also understand there are two types of type conversions. Two types of conversions. What are those? First one is explicit and implicit. So implicit conversions, and the second one is explicit. Now let's understand what is implicit. Implicit means what? It means automatic conversion. Automatically conversion. Understanding, Sangamitra? Yeah. Yeah. And explicit means what? It is not automatically. Not conversion. Now, what is the meaning of conversion? First of all, conversion means if I have 10.3, this is what it is, one of the data type. A is equal to 10.3. Okay, 10.3. This is known as what? Float. Now this float I wanted to convert into integer. How I can convert it into integer? After converting into integer, what will be the value? Only 10.3. This 0.3 will be removed. Yes, that is the conversion. Now in the same way, we have b is equal to true. Now this is what? Boolean value, bool. This I need to convert into what? I need to convert into integer. So after converting, it will become 1. How it will become? That's what we need to check. So this is the meaning of conversion. We are converting from one data type to another data type. So conversion means what? Conversion means Converting into from one data type into other data type. another data type.
converting from one data type to another data type. That is called conversion or changing. Yeah. So up to here we have seen. Yes. Now let's understand this conversion in details. First, we are going to see about implicit conversions on this. Here it is. I'm increasing the font. Yeah. Now, just observe this. If I'm writing here print, now 2 or 5 divided by 2, what will be the answer? 2.5. Mm, exactly. I got how much? 2.5. 5. Now, you just observe here. What is the numerator? Right? Yeah. Numerator means this above, ऊपर वाला. Yeah. 5. And what is the meaning of 5? 5 क्या है? 5 का data type क्या है? Integer है. 5 is integer type. Integer. Okay. Now, denominator क्या है? 2. Denominator का data type क्या है? A float. Float means 2.56 ऐसा. डेसिमल्स में रहता ना, फ्रैक्शंस में रहता ना, उसको फ्लोट बोलते हैं. इसका भी इंटी है ना, इसका पॉइंट नहीं है ना, नहीं है. पॉइंट नहीं है, 5 कोई पॉइंट नहीं है, तो दोनों इंटीजर है. सो when both are integers ins, but the result कितना आया? 0.5. रिजल्ट 2.5. सो 2.5 का क्या है स्टेट? डेटा टाइप क्या है 2.5 का? फ्लोट है. Float. So indirectly what happened is, means directly int converted into what? Float. Integer जो है वो float में convert हुआ. Did we did anything? It is automatically converted, right? We have not did anything, but it is converted automatically. Understood? Ah. Yeah. So this is one of the example of what? Implicit conversion. Yeah. 5/2 convert हो गया. Now in the same way, अगर मैं if I'm doing one more thing, print true plus 1, इसका आंसर क्या आता? लेट्स सी. 2 आया. सो इसका मतलब क्या है? ट्रू क्या है? ट्रू इज अ बुलियन टाइप. Yeah. बुल है. 1 क्या है? 1 इज अ इंटीजर टाइप. Integer. हाँ, ये दोनों को कंबाइन करे तो क्या आया अपने को रिजल्ट? 2. रिजल्ट में 2 आया ना, तो इंटीजर आया. मतलब बुल प्लस इंट, इसका भी कन्वर्ट हुआ ना, चेंज हुआ ना, इंट आ गया दोनों का. सो these are the examples of what? Implicit. डायरेक्ट आ गया. implicit मतलब क्या? ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाना. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, वी आर नॉट गिविंग. अंडरस्टूड? एक डाउट है बा. पूछो. When we are writing true, how come it is showing into? I mean, we are writing bool, right? In the first place. हाँ, ट्रू वी आर राइटिंग. Yeah. So how we are getting the answer 2? बिकॉज इंटरनली दिस ट्रू इज टेकिंग एज 1. Okay. इंटरनली अंदर. अभी फॉर एग्जाम्पल, हाँ,
अंदर ही क्या ले रहा है वो मैं अभी बताता हूँ. लाइक प्रिंट, अभी अपने को इंट में चाहिए ना, इंट ऑफ ट्रू कर दो. सो आई टोल्ड यू राइट, दीज आर द इंट ऑफ, फ्लोट ऑफ. तो Yeah, अभी मैं ये ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू int. इंटीजर. अब देखना क्या आता, क्या आया, 1 आया ना. हाँ भाई. तो इसका मतलब One क्या more. है, इंटरनली ट्रू मतलब 1 होता. Uh, यस, दैट्स yeah, व्हाट आई एम राइटिंग हियर. इंटरनली true is 1. True is is one. 1 when whenever we are performing any operations. Alright. ये तो समझ में आ गया ना, मतलब क्या समझ में आया, डायरेक्टली हाँ, समझ में आया भाई. डायरेक्ट कन्वर्शन हो रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, उसको क्या हाँ, बोलते हैं अपन, in, इम्प्लिसिट बोलते हैं. मतलब डायरेक्टली हो जाना, डायरेक्टली हो जाना उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं. हाँ. ओके. बट एक्सप्लिसिट भी है. एक्सप्लिसिट मतलब टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट करने के लिए वी हैव ऑल दोज फाइव थिंग्स. दीज आर, so there are few functions in Python which will help us to do type conversions explicitly. Explicitly ये इसको यूज करना है अपन. ये इसको यूज करके now we have to check each and everything कि कैसा results कैसा आ रहा, how it is getting converted or not. So now let's see here. First we'll work on everything, all the data types. Here explicit, explicit का मतलब extra factor or not automatically. We are using something extra to do this, to convert from one data type to another data type. So let's see how we can do this. Now for example, a is equal to 12. अभी a is equal to 12 है ना, तो इसको कन्वर्ट करना है. We have to convert it. Print, how we have to convert, int of, int के अंदर इसको a को डाल देना है. Okay, again print int of, ना int हो गया ना. अब क्या करना है, float of a, पूरे फंक्शंस में डाल देना है उसको. प्रिंट फ्लोट ऑफ हो गया. फ्लोट के बाद क्या आता, string. str ऑफ a. ओके. प्रिंट कॉम्प्लेक्स ऑफ a. फिर उसके बाद प्रिंट ऑफ, कॉम्प्लेक्स तो हो गया, अभी क्या है, Bool. यस, बूल ऑफ a. तो अपन a12 को a पूरों में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होता. यस, नाउ बट इसके पहले डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. It was mixing everything, right? हाँ. Yeah. Complex means it is little bit difficult. No, not that complex. In I will explain you. So first I will explain. Yes, first I will explain you this complex. After that we'll go with that. So yes, this we are going to do. But before this,
I will explain you some small information about this. So you understood what is int? But int समझ में आया ना? ah int का मतलब क्या है? 1 2 3 like any number, न्यूमरिक. न्यूमरिक. फ्लोट का मतलब क्या है? 2.5 हाँ, फ्रैक्शंस. ah फ्रैक्शंस और एग्जाम्पल 2.8 और 1.0001, ये पूरा फ्लोट हो गया. str, str का मतलब यू नो राइट, स्ट्रिंग्स. डबल कोट्स में लिखना, सिंगल कोट्स में लिखना और ट्रिपल कोट्स में लिखना. हाय, कामा, हेलो, दिस यू नो, आई नो. yeah, अभी ये इंट हो गया, फ्लोट हो गया. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव? बुल. वी हैव बुल. बुल. true अभी बुल, or बुल का false. मतलब क्या है? ट्रू और फॉल्स. False. बस. Now 4 we are done. No complex. Complex we have studied, right? Like in numeric data type में ये पूरा है बोल के. न्यूमरिक में क्या क्या है? मेनली कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स है, इंट है, फ्लोट है. ओके. सो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है ना? लेट्स लेट्स डिग डीप इनटू दिस. कॉम्प्लेक्स का मतलब फर्स्ट वन इज इसका फॉर्म रहता. इट हैज अ फॉर्मेट. फॉर्मेट. उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? ए प्लस बीजे. A plus bj. This is the format. Okay. Now this is a combination of what? इसमें A क्या है? A is a real part and B क्या है? Imaginary. Imaginary part we can say bj. Understood? इसमें थोड़े रूल्स हैं. रूल्स है इसमें. रूल्स. See, let's see what are the rules. We can first rule. Yes. See here. इसको थोड़ा साइड में रख देंगे पहले. कॉम्प्लेक्स. A is equal to complex. कॉम्प्लेक्स ऑफ 5 भी लिख सकते डायरेक्टली. अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं. प्रिंट ए. अभी ए प्रिंट कर तो क्या आता? एक फॉर्मेट में आया ना. ah मतलब इसमें रियल पार्ट क्या है? 5 है. इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है. राइट. सो why ऐसे. can you explain me once again? हाँ हाँ. सो इसमें ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट है ए प्लस बीजे. मतलब क्या है? रियल पार्ट है. बी मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट है. Okay. ओके. Now, in order to create the complex, we can have one function, one method we have. First one is to create complex numbers. We can use the function like this. ये वाला. इसको प्रिंट कर रहे हैं. A is equal to complex of 5. प्रिंट A. तो अपने को फॉर्मेट में आ जाता आउटपुट. आउटपुट क्या आया था? आउटपुट वाज 0. 5 plus 0j. सो ये क्रिएटिंग का हो गया. सेकेंड वन. ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अपन. और दूसरा भी स्टाइल है क्रिएट करने का. लाइक बी इज इक्वल टू 45 प्लस 7j. प्रिंट बी. सो व्हाट आई गॉट एग्जैक्टली राइट. सो Yeah. दिस इज व्हाट अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग. क्रिएट कैसे करना है? रियल पार्ट करना है और एक ये वाला करना है. प्लस 7j उस फॉर्मेट में लिखना है टू क्रिएट. ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं अपन. ओके. दिस इज something like 1 and this is 2. ये 1 वाला जो है क्रिएशन का है. वी कैन क्रिएट लाइक दिस. अभी क्रिएशन हो गया. अभी सेकंड पार्ट इसका क्या है? इज दिस j इज मैंडेटरी. एंड क्या j in the place of j can I write something else? k. It is giving me error. So what is the second point is
J is mandatory. J मैंडेटरी है. एंड अपन अपन J को ही लिख रहे हैं यहाँ पर. J, कैन आई डू दिस? J को, J इज प्रीफिक्स और सफिक्स? I think prefix. हाँ, J Uh, इज सफिक्स, क्योंकि ये J ना 7 के पीछे है ना. सफिक्स. हाँ, प्रीफिक्स मतलब J 7 के आगे आगे. और अगर इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे J लिख दिया तो काम करता क्या? It is not working. What it is saying, J7 is not defined. So what is the meaning here? J7 के बाद में ही रहना, like this number, after the number only J should be. So what is the next point is, J should be always suffix. Suffix. Suffix means what? After the number. Yes. yeah. फोर्थ. ये रूल्स थे, और इसमें ज्यादा रूल नहीं है, बस दो. यस. एंड जे मैंडेटरी है, एंड जे इस साइड भी लिख सकते, इस साइड भी इस साइड नहीं लिख सकते. एंड वी कैन नॉट राइट बिफोर दिस नंबर, वी ऑलवेज हैव टू राइट आफ्टर दिस. ओके, so these are the rules you need to remember. This up to as of now you have to remember this, how to create. Okay. Okay. Yeah, hope you understood. So this is Yeah. about what? About complex. Good. अब ये complex का हो गया. Now अभी we are done with this. Now let's go with the conversions. So अभी convert करना है अपने को. This one. अब ये है. अब इसका example, I'm taking the example here. 12. अभी मैं 12 को int में convert करूंगा तो क्या आएगा मेरे को आउटपुट? Commenting this here. हाँ. अब ये 12 है ना, 12 को मैं int में मतलब नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 12 ही आता ना. हाँ. और फ्लोट में कन्वर्ट करे तो क्या आता? 6.5. नहीं, हाफ. वी आर नॉट डूइंग एनी हाफ, राइट? हाफ और एनीथिंग. वी आर जस्ट कन्वर्टिंग इनटू फ्लोट. फ्लोट मतलब 0.0 ऐड होता बस. 12.0 जस्ट एक पॉइंट ऐड होता बस. एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे तो सेम ही रहता. कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करे तो कितना आता? जस्ट नाउ वी हैव सीन 12. कितना था? 12 प्लस 0j. एंड बुल में कन्वर्ट करे तो True or false? विल इट बी ट्रू? लेट्स सी. Yeah. तो अपने को ये आ गया. लेट्स सी वी आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. इज इट करेक्ट? देखो पूरा आया. इंट में कन्वर्ट करें तो कुछ भी नहीं आया, सेम ही आया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंट ओनली. एंड वी आर कन्वर्टिंग इनटू फ्लोट. फ्लोट में मतलब 12.0 आया. Yeah. एंड द स्ट्रिंग कॉम्प्लेक्स बुल. अंडरस्टूड? 1 2 3 4 5 पूरा 5 में कन्वर्ट कर दिया अपन. हाँ. ओके. सो ये True क्या आ था? गया. ये क्या था? ये दिस इज ऑल इंट ओनली ना. हाँ. So this, in this example we have learned how to convert int into float. Yes. Float into string. I mean, int into string. Int Complex. into this. So this I will copy it in the notepad here. We have done this. With this, what is the result we got? The result is int can also convert into int. No problem. Complex. Valid है ना? हाँ. Int can convert it into what? Float. Int है float. Valid. Yeah. Valid. Int can convert it into String. str. Valid. हाँ. Valid. Very good. Int can be converted into Complex.
कॉम्प्लेक्स वैलिड। या अभी कोई अगर एरर आया तो इनवैलिड हो जाता। इंट हाँ इंट इज कन्वर्टेड इनटू bool, bool so it is valid। या valid वैलिड क्या आया था bool में? For bool what we got? True। true Yes, so these are the valid point here। Okay, now we are done with what? We are done with conversion of int। अभी int हो गया। Now what I need to convert? Float। Yes, yes or no? yes Yes, here we can add one more thing, print bin of को अपन bin में कन्वर्ट कर रहे हैं। हो जाता ना कन्वर्ट? हाँ bin of मतलब बाइनरी नंबर हो जाता ना 12 का, वी हैव सीन। हाँ हाँ, आराम से हो जाता। तो वी आर कन्वर्टिंग इनटू bool, वी आर कन्वर्टिंग इनटू bin। ओके, to सो complex float हाँ, टोटल 1 2 3 4 5 6, इन द 6 वी आर कन्वर्टिंग। मतलब अगर ये हो गया तो ऑक्टल और हेक्सा भी हो जाता। सो दैट्स व्हाट आई एम नॉट ब्रिंगिंग देम इनटू द पिक्चर। तो व्हाट आर द थिंग्स इट इज? इंट को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर फ्लोट, अगेन कॉम्प्लेक्स, बूलियन, बिन। या नाउ अगेन प्रिंट, this print, what we are doing here is we are converting into like this, o o12 int में, total 12 हाँ, int of something। okay, ठीक है, this we are not writing, so up to now it is enough। I will paste it here। now we are done with what? int is done। now next one, this is observation one, one is done, first one एक हो yeah गया। अभी second one, what will be the second one? float हाँ, करेक्ट। अभी second one क्या है? second one is float। now we need to check with the float। now a is let's take a, same a is equal to float। a is equal to float में मतलब कितना ले सकते हैं अपन? 10.9। 10.9 क्या है? फ्लोट है ना? हाँ तो सेम थिंग आई नीड टू टेक हियर, ऑल दिस सेम, पूरा सेम टू सेम है, बट वैल्यू चेंज कर दिए। वैल्यू इज चेंज। नाउ व्हाट आई नीड टू चेक हाउ दिस इज वर्किंग। ओके, so this is what this becomes float, remaining all will be same, 10.9। अभी ये a इज इक्वल टू 10.9 है, इसको अपन इंट में कन्वर्ट कर दो, कितना आता? 5.5 नो नो, पॉइंट हट जाता ना, इंट मतलब ओनली नंबर विदाउट पॉइंट्स, 5 10 10 होता। और फ्लोट में मतलब फ्लोट का वैल्यू सेम ही रहता, 10.9 10.9। एस टी आर, 10 ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता। एंड कॉम्प्लेक्स 10.9 J जे प्लस 0 जे, हाँ हाँ एंड ये ट्रू रहता। हाँ हाँ एंड बिन ऑफ 10.9, let's check this one। okay, what happened? okay, here I took this 1 one, no? Here I need to take a yeah only। so what are the problem? कहाँ पे problem आया? it is saying line number 7, but we don't have here lines, so we can enable the line also here, show line numbers we have shown। कौन से लाइन नंबर में प्रॉब्लम है? 7 7 में क्या है?
bin of A. 12. So this float cannot be converted into what? Bin. That is the node point we need to write. तो यहाँ पर has, अब देखते हैं, everything is all right. Yeah. It's true. So only this is a problem that we need to make a note. Okay. So float is also done. Now next what we have? Third one. String we have String. str. Now अब str में क्या है? I'm writing name. Name is equal to Sangamitra, right? Is it correct? SANGHA. H. हाँ TH. MH. हाँ हाँ सही है. हाँ सही है भाई. Okay. अभी अपन क्या करेंगे ना? Now we are going to see about, यहाँ पे नोट पॉइंट क्या था? What is the node point here? We have to mention here is, this is the node point. Which one? This one. ये नोट पॉइंट है. मतलब float पूरा कन्वर्ट होना बोल के जरूरी नहीं है. Something will not be converted. Float can't be converted. Float cannot be converted into what? Bin. Binary. Float को बाइनरी में नहीं कन्वर्ट करते बोल के इसमें इट्स शोइंग. Yes. Yeah. Now that's it. Now next one is, next observation we have to see. Now here we need to change here in the place of A, or I will make it as A only. I will change only this. Here it is Sangamitra. Okay. तो अभी ये क्या है? ये स्ट्रिंग है. अभी ए स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये संगमित्रा है. संगमित्रा को इंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ नंबर्स आई कैन कन्वर्ट? Let's see what They happens. convert into int, right? And Huh? float. Int or float we can't convert, right? मतलब let's see what is happening here. मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ. What is the problem here? Invalid literal for int. So here what is the problem here is, I can't, Python is saying I can't convert a name. संगमित्रा means a name. String को integer में कैसे convert कर सकते हैं? No, we cannot. We don't have any clue also. Yeah. We cannot convert. So what we can write here? String can't be converted into int. int में convert नहीं कर सकते इसको. Can we convert it into float? No. Yes, correct. So value error आ रहा अपने को. Could not convert string into float. Could not convert. Then what we need to do? We need to, I will comment this part also. So ये execute नहीं होगा. And what is the message? This is the message. Could not convert string into float. Fine. String को string में convert कर सकते हैं. कर सकते हैं. और string को complex में कर सकते हैं. Let's see. Yes. What it is? Value error. Complex argument is malformed string. मतलब ये error आ रहा. Means we cannot convert even this. इसको मैं comment कर देता हूँ. So even this we cannot convert. Yes. Now अभी देखते हैं फिर से. So only this string is getting converted into two things. Yes. What are those?
So what we have seen, what are the observation point for the string is, yes, Complex. Yeah. string into int. It is valid or invalid? Invalid. Invalid. String into Invalid. float. This is invalid. Again string into float हो गया. अभी क्या है? String. String into String. हाँ string. This is Valid. valid. और string into complex Valid. invalid हुआ. String into Bool. bool. Bool will give true or false. So it is valid. True or false मतलब it is something, right? String मतलब it is not zero or nothing. Zero में false देता है वो. So about string also we are done. Now we are left with what? Bin. Left with the first one is int is done, float is done, string is done. Now complex. Complex. Now let's see for the complex. A is equal to some complex number will write here. Okay. So here I'm just removing all this. Again it becomes fresh. Now instead of this string, I'm taking some complex number. So what is this complex? Anything 25 plus 8j. Yes. Now let's see whether I can convert this complex into integer, into float, into string. Let's see. So what is the error here? In which line we got the error? I didn't get. Huh. Yeah. Yeah. Which line we got the error to? Int Line. argument must be an string, a byte like objects or a real number, not complex. So यहाँ पे type error है. Type error. What is the second point it is saying? A cannot be converted into integer. So this is the problem. We can't convert it. Now next one. Again Float. what it is saying? Float argument must be a string or a real number, not complex. यहाँ पर रियल नंबर लिखना है या तो स्ट्रिंग लिखना है, बट वी आर राइटिंग कॉम्प्लेक्स, सो इट इज ऑल्सो नॉट वैलिड. फ्लोट. नाउ लेट्स सी दिस. Remaining all is working. Yes. Yeah. So this is for what? This is Complex. for complex. Complex. Now, in this complex, what we have learned? Complex means complex converting into int. It's giving what? Invalid. Invalid. Again, complex in float. Invalid in float 2. Yeah, invalid. Again, complex in string. It is Invalid. valid. Valid. Complex in complex. Valid. Valid. Again, complex in Bool. Valid. bool. This is valid. Done. Now we are done with all. We are pending with only one. What is that? Bool. So let's see how to do with the bool. बोल को अपन कैसे करेंगे? बोल में मतलब ट्रू और फॉल्स है ना? Yes. ट्रू. We are removing this one, this one. So now what happens is a is equal to true and I'm printing this part. ट्रू को इंट में कन्वर्ट कर दो क्या आता?
I told you earlier क्या था 1, परफेक्ट वन और अभी फ्लोट में करे तो क्या था 1.0, 1.0 और स्ट्रिंग में करे तो क्या था 1. इज इट वन नहीं लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग सी we are getting any error here no right no errors so इंटीजर में कन्वर्ट हुआ तो 1 आता फ्लोट में 1.0 str में ट्रू आया सेम एंड कॉम्प्लेक्स में 1 प्लस 0 a is to j there. बुल में True. ट्रू आया यस तो str में क्या आया ट्रू कॉम्प्लेक्स में क्या आया था 1 प्लस Plus 0 j 0 then ट्रू में ट्रू true. so this is done now all are valid right in this in bool with all the 5 functions resulting valid valid yes Yes. yeah now when we have understood this now let's solve one small problem let's see if you can answer it now I'm writing what print के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ना float float के ऊपर float के अंदर मैं int कर रहा हूँ int के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ I'm using str str के अंदर क्या कर रहा हूँ bool bool के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ I'm giving complex yes Yeah. एंड कॉम्प्लेक्स में मैं क्या लिख रहा हूँ 23 प्लस 7j सो फ्लोट भी हो गया यहाँ पे फ्लोट है यहाँ पे इंटीजर्स 1 2 3 4 5 पूरे 5 आ गए ना हाँ. एक ही लाइन में पूरे 5 आ गए नाउ व्हाट कैन बी द आंसर फॉर दिस तो टू अंडरस्टैंड द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन कॉम्प्लेक्स अभी ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर सकता ना सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स राइट Yes. एंड उस कॉम्प्लेक्स को अपन बोल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कैन वी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स इनटू बोल Yeah, definitely. True or what? नाउ उस ट्रू और फॉल्स कैन वी कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग str Yeah. and that str can convert it into int float let's see the answer there is something gone wrong कहाँ पे wrong हुआ Complex लाइन नंबर line 1. Line ऑलरेडी 1. एक ही लाइन है ना सो वन लाइन ओनली Uh, नाउ वी हैव invalid literal for what int base so what it is saying int this string cannot be converted into int okay so now what we yeah. can do here is in the place of int here str will make some will write 2 here now what happens now again the same issue the issue is with the int only issue is with the int so here I should not write what str
We'll write this str last. Okay, now let's see what happens. Yes. So what we got? 1.0. How we got 1.0? अभी ये क्या था? Complex of 2. This complex of 2 will give me what? Uh, 2 int plus 0j. two. This complex, ये जो complex है ना, ये मेरे को क्या देगा? 2 plus 0j. This is the output I got. Now this 2 Uh, plus 0j is 2 plus 0j को if we are converting it into bool, it will give me true. yeah. If this true is getting converted into integer int 1, अब ये 1 को अपन कन्वर्ट कर रहे फ्लोट में, अब ये 1 को One फ्लोट में कन्वर्ट point कर दो 1.0 एंड zero. इसको अपन str में कन्वर्ट कर दो, सेम आंसर. Uh, So why I am taking this is just to make you understand that these kind of questions also this kind of questions are also available here. So here ये वाला हो गया and इसका explanation है this one. So I hope you understood. एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना वो स्ट्रिंग. Why did we take from middle to last? Not we are taking from last only ना, इस साइड से लिए थे अपन, कॉम्प्लेक्स था ना. कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 है फॉर एग्जांपल. कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 मतलब क्या है? 2 प्लस 2 plus 0 j. हाँ, this is real part and this real part is what 2 है, पॉजिटिव नंबर. मतलब दिस नंबर एग्जिस्ट राइट. बुल में मतलब क्या आता? ओनली जीरो अगर रहे तो ही वो फॉल्स आता, तो ट्रू आ गया. अब ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करे तो 1 आता, फ्लोट में कन्वर्ट करे तो 1.0 आता, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे तो भी 1.0 आता, सेम. Yeah. Now in the place of complex I am writing what str, and here in str I am writing here 10, and यहाँ पर I will take what complex. Now can you tell me what can be the answer? ये स्ट्रिंग है ना, ये हाँ. आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता? Less छोटे का than बस. 10. Only for this, what is the answer here? You'll get clear idea on this. Print only this. This is also I'm commenting. Now what I got? I got 10. Yes. अभी इसका मेरे Yes. को 10 आ गया. 10 को बोल में करे तो कितना आता? ट्रू आता ना. हाँ. ट्रू को इंट में करे तो कितना आता? 1 uh, आता. हाँ. 1. और 1 को फ्लोट में करे तो कितना आता? 0 1.0. आता. हाँ. कॉम्प्लेक्स में करे तो कितना आता? 1.0 j. I mean 1 plus 0 j. Plus of this. Perfect. Understood. हाँ भाई. उतना ही आया, सेम आया. अच्छा. So this is स्ट्रिंग. also another. ये एक क्वेश्चन था. This is second question. Done. Yeah. So that's it for today. Like we have learned about what are the things we have learned.
We learned about the typecasting, type conversions, implicit and explicit. What is implicit, what is explicit, and what are the 5 functions helping us to convert from one data type to another data type. Yes. So we can't keep string in the